वेलकम बैक गाइस, नमस्ते, कैम छो, कसा काय, की हाल चाल। होप एवरीवन इज़ एक्सेलिंग इन देयर लाइफ। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। टाइटल से पता चल ही गया होगा, बिना पक्षपात काम करने वाले डायरेक्टर के बारे में पढ़ना है, मींस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पढ़ना है। आज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। The provision of independent director is given under Section 149 subsection 4 of the Companies Act 2013 and Rule 4 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rules 2014. It provides the appointment and terms and condition for appointment of independent directors. According to this provision, every listed company में एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर एज आईडी अपॉइंट होने चाहिए एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर ₹100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिन कंपनीज में आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, डिबेंचर या डिपॉजिट इन एग्रीगेट ₹50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो उन कंपनीज़ को अपनी बोर्ड पे एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे। अगर आगे बताई कंपनी को ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी पड़ रही है और उसकी वजह से ज़्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो उन कंपनीज़ को एटलीस्ट उतने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने बोर्ड पे अपॉइंट करने पड़ेंगे टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी। सेकंड पॉइंट, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आगे बताई गई किसी भी 3 कंडीशन में 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में फॉल नहीं करती, तो उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविज़न को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी जब तक कि वो वापस 3 में से किसी एक में भी फॉल नहीं होती। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, फॉलोइंग क्लास ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को आईडी के प्रोविज़न फुलफिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस आईडी के प्रोविज़न इन कंपनीज को अप्लाई नहीं होते। डोरमेंट कंपनी, होली ओन्ड सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर। तो आखिर ये आईडी होते कौन है? चलो फिर जान ही लेते हैं। एन आईडी in relation to the company means a director other than a managing director or a whole-time director or a nominee director. Basically, ID एक non-executive director होता है। Now, let us discuss the criteria of independence for independent director as given under section 149 subsection 6. First criteria is that कि पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन में इंटेग्रिटी वाला एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ वाला होता है। सेकंड क्राइटेरिया इज़ दैट कि जो ना अभी और ना पहले कंपनी, इट्स होल्डिंग, इट्स सब्सिडरी और इट्स एसोसिएट का प्रमोटर था और ना ही वो किसी प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इट्स एसोसिएट, इट्स सब्सिडरी, इट्स होल्डिंग से रिलेटेड है। आगे से हम कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी एंड होल्डिंग के लिए कैश का नेमोनिक का यूज़ करेंगे। थर्ड क्राइटेरिया, जिसका करंट फाइनेंशियल ईयर में या 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कैश या उसके प्रमोटर्स या उसके डायरेक्टर्स के साथ उसके रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर को छोड़ के कोई भी पैक्यूनरी ट्रांजैक्शन नहीं है जो उसकी टोटल इनकम के 10% से ज़्यादा का हो। मींस अगर उसकी टोटल इनकम फॉर अ ईयर इज़ 15 लाख, देन उसकी इनकम, टोटल इनकम के 15 लाख मींस 15 लाख के 10% से ज़्यादा का कोई भी पैक्यूनरी ट्रांजैक्शन नहीं किया है उसने कंपनी के साथ। मीन्स 1,50,000 से ज़्यादा का कोई भी ट्रांजैक्शन उसने कंपनी के साथ नहीं किया है। फोर्थ क्राइटेरिया इज़ दैट
none of whose relative holding any security or interest in the company associate subsidiary holding during two preceding financial year and current financial year in excess of rupees 50 lakh or in excess of 2% of its paid up share capital, provided that उसका रिलेटिव कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग में 50 लाख रुपीज़ की फेस वैल्यू या 2% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल का सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है. None of whose relative indebted to the company associate subsidiary holding or its promoter director in excess of rupees 50 lakh during two preceding financial year and current financial year means जिसके किसी भी रिलेटिव ने कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग प्रमोटर और या तो उसके डायरेक्टर से रुपीज़ 50 लाख या उससे ज़्यादा का उधार नहीं लिया है करंट फाइनेंशियल ईयर में या टू प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिसके किसी भी रिलेटिव ने करंट फाइनेंशियल में या टू प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग या उसके प्रमोटर या उसके डायरेक्टर को किसी थर्ड पर्सन की उधारी के लिए गारंटी या सिक्योरिटी भी नहीं दी है एंड ना ही उसके रिलेटिव का कंपनी एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग के साथ कोई भी पेक्यूनरी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप है जो ग्रॉस प्रॉफिट या टोटल इनकम सिंगली या ऊपर के 3 ट्रांजैक्शन के कॉम्बिनेशन में 2% या उससे ज़्यादा का है. फिफ्थ क्राइटेरिया, who neither himself or nor any of his relative holds or has held the position of KMP or employee of company or its subsidiary, its holding, its associate during 3 immediately preceding financial year, provided that in case of a relative who is an employee of company, this restriction shall not apply for his employment. मीन्स अगर कोई रिलेटिव कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है तो ये रिस्ट्रिक्शन उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई नहीं होगा, खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए ही अप्लाई होगा. उसके बाद नेक्स्ट, who neither himself nor any of his relative is or has been employee, proprietor, partner in 3 preceding financial year of firm of auditor, practicing company secretary, cost auditor of company, its subsidiary, its associate, its holding, or any legal or consulting firm who has or had any transaction with company, subsidiary, holding, or its associate amounting to 10% or more of gross turnover of such firm. Next, who neither himself nor together with his relative holds 2% or more of total voting power of the company. Next, who neither himself nor any of his relative is a chief executive or a director of any non-profit organization which receives 25% or more of its receipts from company or promoters or directors or associate or its subsidiary or its holding, or holds 2% or more of its total voting power of the company. Here हमें ये देखना है कि पहले हमने जहाँ भी पढ़ा वहाँ कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग सबके डायरेक्टर एंड प्रमोटर इंक्लूडेड थे, बट यहाँ जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है उसके ऊपर से हमें दिखने मिल रहा है कि यहाँ पे खाली कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर के ही बात की है और एसोसिएट, सब्सिडियरी एंड होल्डिंग के प्रमोटर एंड डायरेक्टर को नहीं काउंट किया है. सो ये इंटरप्रिटेशन हमें देख के चलना है. एंड लास्ट में है कि जो भी कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए वो नेसेसरी
क्वालिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट स्किल्स पजेस करना होना चाहिए और रेलेवेंट इंडस्ट्री नॉलेज होना चाहिए उसको. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट. आईडी का सिलेक्शन बोर्ड करता है एंड बोर्ड डेटा बैंक ऑफ आईडी विच इज़ मेंटेन्ड बाय IICA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उसमें से भी कर सकता है. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सिलेक्शन करते टाइम बोर्ड को प्रॉपर डिलीजेंस करना चाहिए एंड चेक करना चाहिए कि आईडी प्रॉपर स्किल एक्सपीरियंस नॉलेज रखता है एंड जो बोर्ड को उसका फंक्शन करने में एंड ड्यूटी डिस्चार्ज करने में हेल्प करे. आईडी का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर की मीटिंग में कंपनी के द्वारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके होता है. अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी को फॉर्मलाइज करने के लिए उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भी दिया जाता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 आईडी को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देना पड़ता है टाइम टू टाइम. लाइक वी डिस्कस्ड इन सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 वो सारे क्राइटेरिया वो फिलफिल कर रहा है ऐसा एक डिक्लेरेशन उसको टाइम टू टाइम देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट और इन first board meeting of every financial year and whenever there is any change in circumstances which may affect his status of independence, then in the immediately next board meeting, so he has to give the declaration of independence whenever there is any change in first board meeting of every financial year and first board meeting of his after his appointment. Term of office and appointment. Section 149 subsection 10 and section 149 subsection 11. ID shall hold office for 5 consecutive years in a term. Independent director shall hold not more than 2 consecutive of such term. Independent director shall be eligible for reappointment for second term after passing special resolution in general meeting. Once independent director ceases to become independent director, he shall be eligible to appointment after the expiration of 3 years cooling period. Remuneration and fees. Section 149 subsection 9. Independent director shall not be entitled for stock options, but there is no such restriction on giving sweat equity shares. So, independent director are entitled to sweat equity shares if company wants to give them. Independent director shall receive remuneration by way of fees as provided under section 197 subsection 5. Reimbursement of expenses for participation in board and other meetings, profit related expenses. If company has no profit or inadequate profit, an independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under section 197 subsection 5 in accordance with the provision of schedule 5. Independent director shall receive fees not less than that of other director receives. Means there shall be no discrimination on payment of fees between other executive director and independent director or woman director. Liability of the independent director in the acts of board. An independent director shall be held liable only in respect of such acts of omission or commission by a company which had occurred with his knowledge attributable through board processes and with his consent or connivance, or where he had not acted diligently. Intermittent vacancy. Any intermittent vacancy of independent director shall be filled up by the board at the earliest but not later than the immediate next board meeting or 3 months from the date of vacancy, whichever is later. Means अगर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग डेट ऑफ वैकेंसी के 3 मंथ्स के बाद कन्वीन हुई है, देन द डेट ऑफ सच बोर्ड मीटिंग शैल बी द लास्ट डेट फॉर
for filling the vacancy. And when the board meeting is held before the expiry of 3 months from the date of vacancy, then date on which the last day of 3 months expire shall be last day to fill the vacancy of independent director. Retirement. Independent director shall not retire by rotation. Independent director shall retire on expiry of his term. Independent directors are required because they perform the following important role. They balance the often conflicting interests of the stakeholders. They facilitate withstanding countering pressures from owners. They fulfill a useful role in succession planning. They act as a coach, mentor, sounding board for their full-time colleagues. They provide independent judgment and wider perspectives to board processes. Obligations with respect to independent director as per CMA LODR 2015. No person shall be appointed as an alternate director for an independent director of listed entity. Second, the independent director of listed entity shall hold at least one meeting in a year without the presence of non-independent director. Third, review the performance of non-independent director and chairperson of the listed entity. Fourth, top 500 listed entities shall undertake directors and officers insurance for all their independent director of such quantum and for such risk as may be determined by the board. As per Schedule 6 of the Companies Act 2013, the independent director shall uphold the ethical standards of the integrity and probity. Independent director shall act objectively and constructively while exercising his duties. Independent director shall exercise his responsibilities in a bona fide manner in the interest of the company. Independent director devote sufficient time and attention to his professional obligation for informed and balanced decision making. Independent director shall not allow any extraneous consideration. Independent director shall avoid abusing his position to the detriment of the company or its shareholders. Independent director refrain from any action that would lead to the loss of his independence. Independent director inform the board immediately whose circumstances arises which makes an independent director lose his independence. Independent director assists the company in ensuring best corporate governance practice. Those who want to download the PDF notes, the link is in the pinned comment. And hope you guys liked the video and found it educational. Like, share, subscribe and comment, and thanks for watching.